हमारे पास जो टॉपिक है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दैट इज द लास्ट topic of this chapter. So what is transport? It is a type of transport of material in and out of the cell, where substances are moved, yeah, substances move from their lower concentration, lower concentration to the to their higher concentration against the gradient. Okay, तो जब अगेंस्ट द ग्रेडियंट कोई भी चीज होगी तो डेफिनेटली उसको हमें एनर्जी देना होगी। अगर एक बॉल को, ये शायद लास्ट क्लास में मैं आपको बता भी चुका हूं कि अगर हमारे पास एक बॉल है और उसको किसी इंक्लाइंड प्लेन से आप उसको छोड़ दें तो फिर ये तो खुद ब खुद आ जाएगी। लेकिन अगर किसी बॉल को, यानी इस डायरेक्शन में, तो खुद ब खुद आ जाएगी। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में तो फिर इट रिक्वायर्स एनर्जी, इसको एनर्जी नहीं चाहिए। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको लास्ट क्लास में आई हैव already explained it very well that when particles or the substances move from their higher concentration to lower concentration, so in other words, when they are in their higher concentration, their kinetic energy is higher, उनकी kinetic energy भी ज्यादा होती है। तो फिर kinetic energy, वो लोअर kinetic energy की तरफ जो वो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल है। लेकिन अगर हम लो kinetic energy से हाई kinetic energy की तरफ जा रहे हैं तो डेफिनेटली हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो यहां तक अभी हमने इसमें, इस डेफिनेशन पे हमें 1 मार्क नहीं मिलेगा। हमने कहा इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल वेयर सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम देयर lower concentration to their higher concentration against the gradient. We should include by using energy. अच्छा, एनर्जी किस किस फॉर्म में यूज होती है? इन द फॉर्म ऑफ ATP. Okay, so this is the complete definition of active transport, that it is a type of transport of material in and out of the cell where substances move from their lower concentration to higher concentration to their uh, higher concentration against the gradient. अगर हम against the gradient ना लिखें और ये लिख दें सिर्फ their lower concentration to higher concentration, ये भी काफी है, ठीक है। या फिर आप सिर्फ लिख दें move against the gradient, तो ये भी सेंटेंस काफी है। यानी आप इनमें से कोई भी चीज कट कर सकती हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं अपने आंसर को। लेकिन अहम चीज यह है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इन एंड आउट ऑफ द सेल समटाइम एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू एंटर, for some substances to enter into the cell and sometime to exit the cell. And against the gradient, it is another important point, 2 points. By using energy, 3 points. यहाँ पे अपनी डेफिनेशन कंप्लीट कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी का भी लिखा है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। लेकिन अब मैंने एटीपी लिख दिया है तो हमें एटीपी मालूम होना चाहिए। व्हाट इज एटीपी? इट मींस एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नंबर 1 ये है कि as the concentration of glucose in intestinal lumen means lower than the concentration of glucose, epithelial cells of villi. Now, important thing is that what is villi?
Okay, so see the diagram. इस तरह से सेल्स हैं ये. अब मैं इसको एक डबल लाइन के थ्रू शो कर दे रहा हूँ. In our intestine, there are certain finger-like projections which are called villi, and there would be another villi, and these cells are called epithelial cells. I've shown only 3. And this is the lumen where our food moves. Okay. So Okay. after digestion, glucose enters into the cell. Glucose यहाँ से cell में enter होगा. So here the concentration of glucose is lower, and in the cells concentration of glucose is higher. लेकिन इसे तो enter होना है, cell में ही absorb होना है ना. Why we eat? We eat to absorb the material, absorb important nutrients. So one of the nutrient is glucose. So the concentration of glucose is lower in intestine as compared to the concentration in our epithelial cells of the villi. So it has to absorb against the gradient. So definitely it needs some energy. So after consumption of energy, it will absorb into the epithelial cell, and then from epithelial cell to the other parts of the uh, uh, in this interstitial fluid, and then to the blood. Okay. So its transport from lumen of intestine to these cells is active transport because it is against the concentration gradient. So actually those cells where active transport occurs, they have large number of mitochondria. And you know the role of mitochondria. Mitochondria respire to give energy. They generate energy. Okay, got it? Yeah. Okay. And the energy, actually, what happens there? The energy released during respiration. Okay. The energy Yeah. released during respiration by mitochondria. What does it do? See, the energy released during respiration by mitochondria is converted into kinetic energy of glucose. So in this way, they increase the kinetic energy of glucose that is outside the cell where it was in low concentration. Okay. The another important importance of active transport is in kidneys. In kidney tubules, same mechanism operates to absorb certain material back into the blood. तो किडनी में भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है. ओके, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिर्फ यहाँ Yeah. नहीं है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट किडनी में भी है. गॉट इट?